Good afternoon, one and all present here. Myself, Dr. Kavita Dive. Today, just we discuss the national income. What is the national income and what is the impact of the national income in our country? क्या impact होता है हमारी country के लिए, जो आज हम पढ़ेंगे. National income is the total monetary value of all goods and the services produced within the country brought during the specific period and टिपिकली अ ईयर. मतलब एक साल में जो भी हमारा प्रोडक्शन है, जो भी हमारी सर्विसेज है, इसके अलावा जो भी हमारा पर कैपिटल इनकम है, इसको जब हम एग्रीगेट में काउंट करते हैं, जब हम इसका टोटल देखते हैं, तो कहीं ना कहीं दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम. वो सारी जो हमारी एग्रीगेशन से सारा हमारा जो एग्रीगेट है, हम उसको नेशनल इनकम में ऐड करते हैं. फिर हम बात करते हैं नेशनल इनकम के डेफिनेशन की. नेशनल इनकम रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. कहीं ना कहीं हम जब मैन्युफैक्चरिंग से लेके ओवरऑल फाइनल गुड्स की बात करेंगे, तो जो हमारा फाइनल गुड है, जो हमारा गुड्स बन के तैयार हो जाता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ अ नेशनल इनकम. वो उसमें इंक्लूड होता है. प्रोड्यूस बाय द कंट्री एंड रेसिडेंट बोथ विद इन द कंट्री ब्रॉडर एंड अब्रॉड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड. हमारे यहाँ पे बनने वाली चीज़ें, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ें, दैट्स दे आर दी also included of the national income. It means our capital, our national capital and plus the export, they are the important part of the national income. Now the key component factor is the includes the income earned by the factor and production. At the 5 factor also important of the components, just like a labor, capital, land, entrepreneurs, and the most is the 5 factor, they are very important, is the risk. In the form of wages, salary, profit, rent and interest, they are the main factor of the key components. Now, how will measure the national income? National income can be measured using the various indicators like a GDP, GNP and also the NNP. National income is the circular economic indicator used to analyze the national economic growth, standard of living and the overall economic performance. They are the main important part of the economy. How will you design the standard of living? How will you economic overall performance in the national economy? Then the other related item is GDP, GNP and the NNP. How will you calculate the national income? The first is the product output method. And the income method and the expenditure method. That is both the method for the student, they are very beneficial of the income and expenditure method, and the next topic we will cover in the income and expenditure method in the next lecture. Thank you.